रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2022-23 की पहली मौद्रिक नीति का ऐलान कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति का ऐलान करते हुए कहा कि ब्याज दरों यानी कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, वो पहले की तरह 4% पर बरकरार है। देश के केंद्रीय बैंक RBI ने शुक्रवार को नीतिगत दर को लगातार 11वीं बार एक जैसा रखते हुए इसे 4% पर कायम रखने का फैसला किया है। रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35% पर ही रखा गया है। शक्तिकांत दास ने कहा कि बोर्ड की बैठक में सभी सदस्यों ने इस बात पर सहमति जताई कि ब्याज दरों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। Against this backdrop, the Monetary Policy Committee, that is MPC, met on 6th, 7th and 8th April, and based on an assessment of the macroeconomic situation and the outlook, voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 4%. The MPC also decided unanimously to remain accommodative while focusing on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. The marginal standing facility, that is MSF rate and bank rate, remain unchanged at 4.25%. Further, it has been decided by the Reserve Bank to restore the width of the liquidity adjustment facilities, that is the LAF, that is the LAF corridor, to 50 basis points, 50 to 50 basis points, the position that prevailed before the pandemic. The floor of the corridor will now be provided by the newly instituted Standing Deposit Facility, SDF, which will be placed 25 basis points below the repo rate, that is at 3.75%. खास बात यह है कि विकास दर की रफ्तार में संशोधन किया गया है। पहले विकास दर 7.8% रहने की बात कही गई थी, जिसे घटाकर 7.2% कर दिया गया है। शक्तिकांत दास ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था महामारी की वजह से पैदा हुई सुस्ती से अब धीरे धीरे उबर रही है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति बढ़कर 5.7% पर पहुंच सकती है। Inflation is now projected to be higher and growth lower than the assessment during February. Economic activity, although recovering, is barely above its pre-pandemic level. Against this backdrop, the MPC decided to retain the repo rate at 4%. It also decided to remain accommodative while focusing on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. I would now like to provide our assessment of growth and inflation. And first, I would take up growth. According to the second advance estimates released by the National Statistics Office, NSO, on February 28, real GDP rose by 8.9% in 21-22. Private consumption and fixed investment, key drivers of the domestic demand, however, remain subdued, with these two components being only 1.2% and 2% respectively above their pre-pandemic levels. On the supply side, contact-intensive services still trail the 2019-20 level. Nevertheless, the Indian economy is steadily reviving from its pandemic-induced contraction. रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति का ऐलान करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था बड़े विदेशी मुद्रा भंडार की वजह से संतोषजनक स्थिति में है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था के बचाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। महंगाई से जूझ रहे देशवासियों को भले ही ब्याज दरें घटाए जाने की राहत नहीं मिल पाई है, लेकिन ब्याज दरें नहीं बढ़ाकर भी उन्हें राहत दी गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।